वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर पीरज़ादा। थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। हम बात कर रहे थे नुमान कमर से, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से वाबस्ता हैं पिछले 20-25 सालों से। तो हमने पहले सेगमेंट में हमने आपसे बात की कि हाउ डिड ही स्टार्टेड एज ए कंसल्टेंट फॉर maybe absentee owners who wanted to own a facility or hotels or motels. So नुमान, आपसे उस बात को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि आपने कंसल्टिंग से स्टार्ट किया माशाल्लाह, और यू ग्रो अ बिग टाइम माशाल्लाह। आपने पूरे अमेरिका के अंदर अपना अपना काम आपने बढ़ाया, और which was very interesting as you mentioned that you are also expanding in Pakistan. So hopefully we'll discuss further on those. तो हमारे नाज़रीन को ये शेयर कीजिए कि आपने कंसल्टिंग के बाद when and how did you decide and how did you own your first business or hotel? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि knowing the industry itself was always a plus in any industry. एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास सिंसिनाटी में होटल मैनेज करने की, और उसके वही एब्सेंटी ओनर्स थे, एंड दे बेसिकली हैव डिसाइडेड कि भाई उसमें 3 पार्टनर्स थे, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली एशियन पटेल ग्रुप। और उन 3 पार्टनरों में से 2 पार्टनरों ने कहा कि भाई हम रहना चाह रहे हैं, एंड वी वांटेड टू बेसिकली द थर्ड वन डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू लीव। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह से आई थी कि भाई एज ए कंसल्टेंट हमारी कंपनी को लाया गया कि भाई आप हमें इसको थर्ड पार्टी को मैनेज करिए। हम लोग मेम्फिस में रहते हैं, ये सिंसिनाटी की प्रॉपर्टी है, एंड द होटल इज़ डूइंग एक्चुअली बिलो द मार्केट व्हाट इट वाज डूइंग। तो एट दैट टाइम वो जो 2 लोग थे उनमें से एक ने कहा कि यार एक काम ये करते हैं कि व्हाइल यू आर मैनेजिंग इट, why don't you raise some fund of your own and become partner an existing hotel. Okay. So that was actually, since I've been involved in this industry all this year, तो मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, लाजमी है थोड़ी बहुत hefty investment थी। तो at the end of the day I maxed out all my credit cards. कुछ credit card बेगम से लिए, कुछ लोन इधर से पकड़ा, कुछ लोन उधर से पकड़ा, कुछ पैसे भाई से लिए, और अल्लाह का नाम लेके, बिकॉज knowing that the evaluation of that property was well enough for me to know that I will get my return. तो वो हमने प्रॉपर्टी खरीदी 2004 में, and I just bought a very small share of 15% in that hotel, but as a operating partner, managing operating partner. उसके बाद हमने यानी that was what I call it my very first earned dollar as a owner of a hotel. Managing partner, operating the property. और उस 6 महीने के अरसे में जो हमारे पास वो प्रॉपर्टी रही सिंसिनाटी में, we turned the revenue from 700,000 to 1.4, almost double in 6 months. Because the way it was operating before, nobody has ever seen the revenue, where the generating of the revenue is coming from. तो उसको स्ट्रीमलाइन हमने किया। वो 3 से 4 महीने लगते हैं आपको रेवेन्यू को स्ट्रीमलाइन करने में। तो वंस वी स्ट्रीमलाइंड इट, इट बिकम होम रन। प्रॉपर्टी खरीदी एक्स में, रेवेन्यू उसका अच्छा खासा था, द प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट मेक डबल रेवेन्यू। हमारे पास X+Y का रेवेन्यू के साथ एक ऑफर आई फ्रॉम न्यूयॉर्क, and we sold that hotel in 8 months of operation. Okay. So 8 months while I was managing the property, and owning the takes property. about that time anyway in order for you to turn the property around. But the rest is history, Amir. That was my first. I paid off all my credit card at that time, paid off my brother, and thank him for lending me that money along with some interest to him. और फिर is just a multiplication aspect of it. एक अच्छी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री में कि once you know which direction
your revenue streamline is. Right. You can in-house evaluate market. Uh-huh. You can in-house evaluate franchise flag as well, and then have an understanding of what kind of a return of Fairfield Inn as compared to Comfort Inn, Yeah. or Fairfield Inn as compared to Best Western, or Best Western as compared to La Quinta, multiple brands. तो आपके पास एक in-house data होता है कि which market is producing what. So my first development, once again we are talking about ground up, was in Atlanta. तो हमने जो सिंसिनाटी की प्रॉपर्टी बेची उससे जो पैसे आए वो हमने 1031 exchange. I think that most of our people who are in this or in business know what 1031 exchange is. So we did the 1031 exchange with that funds directly into Atlanta, bought the land with it, and did construction on it for a Holiday Inn. That was my first roll down or roll up sleeves situation. Get your hands dirty. First development, bigger franchise name, become a home run. That hotel, with the operations of it, become so successful that we got nominated by Intercontinental Hotel Group, IHG, for one of the best hotel for the very first year as it returns. And the rest become history, क्योंकि उसके बाद फिर ये कि once you start making in business your first dollar, the first 100 will be much easier, and then the 1,000 will be much easier. That's right. So that's how it goes. The very first dollar is the hardest. Very nice. तो आपने industry में शुरू किया as a consultant. You worked for somebody, did you say initially, right? Yes, I worked for used to work somebody. for a company, yes. And then you started your own consulting firm, Yes, and sir. you managed for many years, and then you had an opportunity to own one. You sold one successfully, then you bought another one. So अभी माशाल्लाह आप लोगों के पास और आपके IHS group के पास, and you have expanded माशाल्लाह all over United States. Yes, sir. So of course growth माशाल्लाह जारी है. Wish you very good luck for those plans. We will also talk you expanding in Pakistan. तो उससे पहले उस टॉपिक से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से हमारे व्यूअर्स अगर जानना चाहते हैं, जिसे हमने ऑपरेशनल पार्टनर्स की जिक्र किया, एब्सेंटी ओनर्स, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट डू यू सजेस्ट a new person, because now that person knows that I don't have to stay like some people we still see in hotels and motels where the whole family is living there, right? So that might be one thing to maybe save money. Right. But how would you suggest our viewers if somebody wants to be a absentee owner and hire a person like you? Well, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए इस इंडस्ट्री में भी आप किसी और इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें तो इस इंडस्ट्री में भी सेगमेंट्स हैं. There is a segment of hotels where it do require for a family to stay there because it doesn't generate enough revenue for you to have a management company support. दूसरी चीज़ ये है कि जो first time buyers हैं या first time hotel owners हैं या first time hotel investors हैं, उनके लिए सजेशन यही है कि छोटा निवाला उस यानी as compared to 500 room Hilton or a 300 room Days Inn exterior छोटा छोटे ब्रांड का होटल, I will not suggest. उसका रीज़न ये है कि the older the property, the more hassle it will have. The newer the hotel, the better option you will have for आपके मेंटेनेंस के इश्यूज जो आते हैं, प्लम्बिंग के इश्यूज हैं, ये सारे बैक एंड वाले इश्यूज हैं. तो आई थिंक द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इज टू स्टे विद इन ए सेलेक्ट सर्विस ब्रांड विच वी कॉल इट बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो लंदन में इंग्लैंड में होता है कि भाई ठीक है आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया, नो रेस्टोरेंट, stay within the 70 to between 70 to 90 room hotel, easy to operate, easy to manage. उसमें ये है कि आपके पास कंट्रोल एस्पेक्ट्स रहते हैं,
ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट रहते हैं, और it's an easy investment to make. And then once you get your hands in that area, business, and then you can be able to move up from 1 to 2 to 4, and then go for a bigger and larger brands with a larger number of rooms. So number of room counts, flag counts. Flag counts. Okay. बिल्कुल. मेरे ख्याल से I have always been a आप कह लें कि outspoken in our industry. I work only with 3 or 4 brands, and that's pretty much it. Okay. हमारे पास इस वक्त भी जो हैं वो Hilton, IHG, Marriott and Hyatt, इन 3 ब्रांड 4 ब्रांडों में, that is where I think the return of investments lies. Even though people, I'm not gonna say that people are not making money from choice hotels or La Quintas or Best Westerns, मगर क्योंकि once again the table has turned, I have become an investor and partner and developer and owner and operator. तो इन सब चीज़ों को जब आप accumulate करते हैं तो construction cost, अगर आप किसी भी contractor से पता करें, तो construction cost for an 80 room hotel is identical to any brand as long as you're maintaining that 80 rooms. But जैसे मैं और आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर शेल का स्टेशन का नाम लगा दें या किसी भी और ब्रांड का नाम लगाएंगे तो द ब्रांड सेल्स. इसी तरह होटल इंडस्ट्री में भी है. आपके पास ये 3-4 बड़े नाम हैं ब्रांड में, मैरियट है, हिल्टन है, IHG का है, हायत हैं, ला क्विंटास हैं, बेस्ट वेस्टर्न्स हैं. ये अच्छे ब्रांडों में इनका शुमार होता है. मगर जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं और आप जब डेवलप करते हैं प्रॉपर्टी को, तो द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज स्टिल द सेम, क्योंकि ग्रे बिल्डिंग इज अ ग्रे बिल्डिंग. जब आप उसके ऊपर फ्रेंचाइज का नाम लगाते हैं, दैट when your return of investment become double, triple, 1.2, 1.3, it depends on what kind of a franchise and what kind of flag are you putting in. So, based on my business experience in gas station industry, so do they pay you for the brand? I'm just asking you, or is this something because you are promoting their a brand with your money? So do they pay you, or you just waiting to have appreciated value to have that brand? होता क्या है कि एक तो अगर ब्रांड ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे कि आप अगर और मैं नाजरीन को भी ये बता दूं कि जब हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, तो IHG has brands that maybe most of the people don't aware that they are IHG brands. उसमें मैं आपको बताऊं, इनके पास सबसे बड़ा ब्रांड है इंटरकॉन्टिनेंटल का. So इंटरकॉन्ट के बाद आता है क्राउन प्लाजा. So क्राउन प्लाजा is an IHG brand. And then they have Holiday Inn, Holiday Inn Express, Stay Bridge, Candlewood, अभी इनके पास होटल इंडिगो, अभी Kimson Hotel. There are few hotels that they have added up into their portfolio. अब ये वो ब्रांड हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड और एस्टैब्लिश्ड हैं. जब ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, उस वक्त ये हम जैसे डेवलपर्स को बुलाते हैं कि भाई आप बताइए ह्यूस्टन के अंदर, डैलस के अंदर, ऑस्टन के अंदर हम ये ब्रांड लाना चाह रहे हैं. And that's where they can be able to be more flexible in royalties. They will give you some development money back for you to start developing their hotels. That is happening now as we speak. There are other brands that are doing that. Because in order for them to promote their new brand, they wanted to make sure that the developers are tapping into it. So let's say some investor or people who want to start their own business, आप जैसी कंपनी को हायर करते हैं और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो what would be the amount because of owning a hotel? What is the minimum rooms, with a reasonable brand? देखिए, how much would it cost in dollars? अब project to project cost है. Let's take the middle. I can tell you
from you can find an established hotel in a good market somewhere between 7 to 11 million US. मगर depend करता है आमिर which land. अब आप of course, we are not gonna hopefully go. आप उस business में हैं डेवलपमेंट के और आपको आइडिया है रियल एस्टेट का, तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ अ लैंड दैट यू आर सिटिंग ऑन, क्योंकि लैंड प्राइस dictates what your project cost will be, higher or lower, क्योंकि construction cost will stay the same no matter where you built. So it depends, and then there are lenders who can be able to lend the money based on portfolio, how the business been running. So अभी हमने जो इस इंडस्ट्री में देखा है somewhere between 75 to 25 LTV loan to value पे लोगों को लोन मिले हैं अपने ओनिंगशिप में. So आप अगर फर्ज कीजिए एक राउंड ऑफ फिगर लेके चलें, अगर $10 million का प्रोजेक्ट है तो 7.5 will be bank money and 2.5 will be the investors money. उस 2.5 में आप पार्टनर्स लेके आ सकते हैं, ओनर्स लेके आ सकते हैं, that becomes the ownership group. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर $10 million का प्रोजेक्ट है तो पूरे के पूरे $10 million ही आपके पास होने चाहिए. As long as you have 2.5, about $3 million cash with other partners, accumulated. Either you bring your own or you get some partners on board. Majority lender आपसे बोलता ये है कि as long as you keep 20% or more, then you guarantee the loan. So अगर आप $2 million की बात करते हैं तो 20% of it has come out to be $400,000, and if you have $400,000, then you can own a 20% of that particular property. Absolutely. So नाज़रीन, हमने इस सेगमेंट में नुमान से बातें की. How did he start his business as a consultant? Then he, माशाल्लाह, started owning his first property. और हमने दोनों एस्पेक्ट से बात की कि एज ए ओनर ऑपरेटर और अगर किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर को, एब्सेंटी बिजनेस ओनर को सर्विसेज हैं होटल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड हाउ कैन दे मेक इट if you have 20% or 30% based on bank requirement, you can either own it, you bring your partners, and then you can grow the same way. Mashallah, he did. So Numan, mashallah, have grown company so big that they are exploring, and as a matter of fact, starting businesses in Pakistan. They are bringing the same brands in Pakistan after expanding all over USA. So नाज़रीन, अगले सेक्शन में हम आपसे दोबारा बात करते हैं नुमान से. शुक्रिया.